So today is the day 4 of our discussion, right, on Django. Yeah, Django, yeah. So what we will do today, yesterday on day 3 we discussed more on the templates as well as static files. What are templates and what are static files, and how we incorporate them in Django. Today we will Mm-hmm. delve into the model part. I mean modeling part of our Django Django application. And so before going to that, I just want to share some theory part of it. I'll just share my screen and then we can get started with the practical part. So Okay. what I'll do, remove this. Let me just go to the model.py file. Okay. So what happens actually if I just comment it and write in between. So what happens? We basically Django whenever we want to do some dynamic, as we were discussing, right, templates are used to display dynamic content to the user, right? But Mm-hmm. the thing that we did yesterday was with the views. In that we passed some dynamic data, right? Like Mm-hmm. we prepared a dictionary and passed it in the context, and it was then rendered in the templates file. uh, my name is name, right? This is the Mm-hmm. key that we passed in from views, and that key was basically that is something that got displayed in the view itself, right, in the index.html itself. Now this is something static data we have mentioned here. What if we find a way to basically retrieve data from database? So in our case the Mm-hmm. database is SQLite 3. Okay, retrieve the data from database and display that data in the UI, I mean index.html. Okay, so for that, so that's how our dynamic dynamic application will be looking like. So we will be having a form to view the data, we will be having a form to add the data, delete the data, as well as edit the data. So before doing going into the all the aspects of I mean insert, update, delete, view, right, we will first of all start from how basically we can uh, first of all create schema in our database. Schema in the sense हम अपने database में कैसे tables create कर सकते हैं via Django. So Django, as you are aware, right? Django has multiple. I mean, it can work with multiple sources, database sources like Postgres, MySQL, and even Mongo is there, and as simple as SQLite 3. So for our case, we are using SQLite 3. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ये समझने का ट्राई करेंगे कि हम लोग सबसे पहले किस तरह से how we can basically insert create tables in our database by using Django. Mm-hmm. So that is the first thing that we'll learn, creating schema Mm-hmm. in For database. SQL Lite, right? What we Yeah, have right now. yeah. So creating schema in database, okay, and performing migrations, Mm-hmm. then adding it in the admin. We have the admin panel in place, right? So whatever Mm-hmm. tables we have created, we should basically store that table, that those tables should also appear in the admin panel. Mm-hmm. Okay, so how what is a way to basically do that? एडमिन पैनल जो हमने फर्स्ट टाइम लॉगिन किया था वेब पेज में और That's, yeah, एडमिन एज अ correct, वही उसके अंदर अभी हमको यूजर्स और ग्रुप्स करके दो टेबल दिख रहे थे, करेक्ट? याद हो आपको तो? हाँ हाँ उसके अलावा हम लोग कैसे हम जो नया जो टेबल क्रिएट करेंगे डेटाबेस में, वो कैसे हम लोग दिखा सकते हैं वहाँ पे? सो दैट इज समथिंग वी हैव टू बेसिकली सी वो किस तरह से कर सकते हैं. ठीक है, दिस इज थर्ड थिंग. फोर्थ थिंग दैट वी विल ट्राई एंड डू इज, once our database and models are created, we will try and fill in some dummy data in it via admin panel itself. And fourth and fifth thing, if time permits, we will also check. We will try and
the final step that we will try to do is basically uh, get the data and display it in the UI. Get the data Mm-hmm. from database and display in the UI. I mean via with template, via template. तो जो हमारा टेम्पलेट है उसको हम लोग डेटा पास करेंगे डेटाबेस से। यहाँ पे किस तरह से पास किया है, अभी हमने स्टैटिकली पास किया है। Mm-hmm. इस पॉइंट पे हम लोग डेटाबेस से रिट्रीव करेंगे एंड देन वी पास इट टू द इंडेक्स एचटीएमएल बाय यूजिंग द रेंडर फंक्शन index.html, करेक्ट। Mm-hmm. इस तरह से हम लोग वी विल ट्राई एंड फॉलो दिस स्टेप्स एंड so this is the I mean more on the theory part. So let's start with the first thing, creating schema in database. Okay, so for doing that, let me uh, do enter here. Okay, so for doing that, what we have to do, we have to create a class. So what so before creating any table, right, we should basically discuss on key important things, what we are trying to make. I mean, what is the requirement we are trying to fulfill, right? So for our example, let's say we are trying to make a blogging website. Mm-hmm. ओके, सो अगर आप ब्लॉगिंग वेबसाइट देखेंगे, सिंपल ब्लॉगिंग वेबसाइट, तो आपको क्या क्या एंटिटीज दिखती हैं उसके अंदर? Blogging website, right? हाँ, हम एक ब्लॉग के अंदर Um, हमें क्या क्या एंटिटीज दिखती हैं? Title, and then is it content, ओके, user, कौन ब्लॉग कर रहा है। सो सबसे बेसिक लेते हैं, वी विल नॉट इवन गो टू द यूजर, सबसे बेसिक चीज लेते हैं। सबसे बेसिक चीज होती है, सबसे पहले आप किस कैटेगरी का ब्लॉग लिख रहे हैं, करेक्ट? हम्म। जैसे कि आप मीडियम पे जाते हैं तो मीडियम पे बहुत सारे कैटेगरीज हैं, बीट आईटी, बीट टेक्नोलॉजी, बीट एनीथिंग, आई मीन जियोग्राफी, हिस्ट्री, और so many topics are there, right? Spirituality, religious things, and different topics are there. So first thing that comes is the category. User and everything we can talk about, I mean we can have it later also, but to just create a just write and display a blog, the first thing that comes is category. Okay, category of the blog, that is a topmost thing. Second thing comes the blog itself. So in category, what can category में क्या क्या हो सकता है? category में हो सकता है category का नाम, correct? What category it is. And the second thing that can come for a blog, so सबसे पहले blog का हो सकता है क्या 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 हो सकता है, एक blog के अंदर क्या क्या information हो सकती है? टाइटल हो सकता हाँ, है, ब्लॉग का टेक्स्ट हो सकता कंटेंट है, हो सकता है। कंटेंट हो हाँ। सकता है, करेक्ट? आई मीन दिस टू बेसिक थिंग्स कैन बी, सो वी आर जस्ट टेकिंग द बेसिक थिंग्स, not going into the complexities of all the thing that will go later, but abhi we are just taking baby steps, right? So we will not go into the complexities of how blog is created, how other entities are related to blog. So just simple thing, a blog is there, a category is there, blog will be coming under a category. So whenever मैं जब भी मैं एक blog create करूंगा, I will select a category, I will write the title, and I will write the description of the blog, and I will save, right? That's how I will do. And to the in the UI, that blog will appear with the title, with the category, and the description, correct? That's what we want to do. सबसे पहले हम लोग को क्या डेटा टेबल बनाना पड़ेगा? So before writing code, right, let's do some rough work. Let's go and open Excel, and if I'm having WPS Excel itself, but it's not there. Okay, so I will go via this. सबसे पहले हम लोग को क्या चाहिए? सबसे पहले हमें कैटेगरी डिसाइड किया, करेक्ट? कैटेगरी, कैटेगरी एक टेबल है, एक टेबल कैटेगरी ले लेते हैं जिसके अंदर कैटेगरी का नाम होगा, let's give it a small case because our Python understands, I mean Python uses small casing, so this is category table. यहाँ पे हम लोग नेम इसको देते हैं, we will give it a name called as column, right? This is column,
टेबल किस तरह से जनरली क्या टेबल का नाम होता है और उसके अंदर कॉलम्स होते हैं, करेक्ट, और उसका डेटा टाइप होता है। इस तरह से हम लोग डिस्कस विल डिक्लेयर अ टेबल, राइट। आपने कभी डीबीएमएस इन कॉलेज यू हैव रेड अबाउट, आई मीन, या राइट, सो हाँ हाँ दैट कंसेप्ट देन यू कैन अंडरस्टैंड। तो या टेबल टेबल के अंदर क्या क्या होता है, कॉलम नेम होता है, करेक्ट, उसका या डेटा टाइप होता है। सो कैटेगरी हाँ नेम को क्या डेटा टाइप दे सकते हैं हम, वर्कर ऐसे या वेर कैर, करेक्ट। हम्म So this is very simple. This thing, this is a very simple हम्म table having one column, हम्म and what all constraints can be associated. There will also be a constraint. yeah like maybe null Yeah, but category maybe name can't be null, right? yeah So it can be either non unique, null yeah unique or non unique and non-null, right? null Unique and not null. So let's keep it like this. Okay. Let me just format it little bit, and let's just merge it. Okay, now we will design the block table. Let's design the block table. Okay, in block, what all fields can be? So let me just copy this format itself. Okay, I will give it a name block. So in what column can we get? I mean, first of all, there will be a title, correct? First of all, there will be a foreign key to the block. So we'll just type in category. Okay, data type will be same varchar. Constraint will be, I mean, it will be unique and not null, and there will be a key, right, whether it will be a primary yeah key or so. So that will also come in the constraint itself. We can define it in the constraint. And what it will be, and foreign key, right? yeah okay FK. Okay, I will just try type in like this. mm-hmm. Now comes the second thing. I mean, what block के अंदर और क्या क्या हो सकता है? We can have a title, right? Okay, title in place. Block का title खुद का कुछ title होता है. हाँ तो title भी varchar हो सकता, varchar में ही होगा, correct? Title will also be unique. I mean, you can't have same block with different same different title block with same title, right? हाँ So we'll just, for our understanding, we'll keep it unique and not null. Okay, and not null. FK will not come. Okay. Now what other thing can come? Block text, right? The block का जो text होता है वो होगा, correct? तो ये इसको भी हम लोग varchar max ले लेंगे. So varchar when varchar max means varchar, let's consider category will be not be more than 100 varchar yeah length, okay and title, let's say we can't be more than 200 length. Okay. Block text only one construct, not null. It will not be unique, but we will just take. So these are the two tables, simple tables that we have. Now just imagine that by using this data, what we will display, we will just display the blog information. कि ब्लॉग इन्फॉर्मेशन कैसे आएगा, लाइक पहले तो हम लोग मॉडल बनाएंगे इसको डेटाबेस में, इसका टेबल डेटाबेस में यही टेबल हम लोग बनाएंगे, फिर उसके अंदर डेटा इंसर्ट करेंगे वाया एडमिन पैनल, and then we will try to consume that data from database and display it in the UI by using the templates. Okay, ये चीज करनी है हमें. तो सबसे पहले जाते हैं हम लोग फर्स्ट स्टेप पे जाते हैं, कैसे हम लोग मॉडल बनाएंगे. तो फर्स्ट स्टेप पे जाएंगे तो यहाँ पे वी हैव द मॉडल्स डॉट py फाइल, राइट, इन द फर्स्ट स्टेप. तो ये हम लोग फर्स्ट स्टेप के अंदर ही कर रहे हैं. ओके, सो फर्स्ट स्टेप के अंदर हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल डिक्लेयर करेंगे पहला वाला कैटेगरी. सो जांगो में क्या होता है, जांगो में बेसिकली यू डोंट डायरेक्टली डिक्लेयर स्कीमा इन डेटाबेस. You okay first create a class, okay, and do migrations. It automatically create database tables. okay That's how it happens. So पहले हम लोग class बनाएंगे, class category,
we will try and put the same things. अब यहाँ पे कुछ Django के concepts हैं जो use होंगे. It will inherit the class called as model.models. Mm-hmm. Okay, models.model, and Mm-hmm. we'll place an enter. Okay, now we will define the first thing, that is the category name. Okay, so let me Mm-hmm. define category underscore name. Okay, and it will be having models dot char field. So this is how char field is defined, and in that we will type in what constraints we had. We had unique, right? Mm-hmm. First of all, we will define the length as 264, whatever 264, and then we will define what length we have. So length of Mm-hmm. the this thing, and we will define the basically, I mean, so define the length, right? We have to go while this max underscore length is equal to 264. 264, or let's say 100 characters, right? Mm-hmm. Category name can't be more than 100 characters. And then we Mm-hmm. can define the unique constraint. So unique constraint is can be defined like this: true. Just define true. So true here is capital in Python, correct? अब यहाँ पे हम एक स्पेशल फंक्शन डिफाइन करना है जो है स्ट्रिंग. जस्ट इन केस अगर आपको अपने इस क्लास का कुछ स्पेसिफिक आउटपुट चाहिए, जो अगर आप कैटेगरी का स्ट्रिंग करते हैं तो आप क्या रिटर्न करेंगे? रिटर्न कैटेगरी नेम सेल्फ डॉट कैटेगरी अंडरस्कोर नेम. ओके, ये आपने बना दिया क्लास. कैटेगरी में सेल्फ आएगा. ओके, अब आपका आएगा सेकंड थिंग, द ब्लॉक क्लास, राइट? सो लेट्स क्रिएट अ ब्लॉक क्लास. यहाँ पे भी हम लोग मॉडल्स डॉट मॉडल से इनहेरिट करेंगे. बस यहाँ पे हम लोग कैटेगरी करके एक वो प्रॉपर्टी. सारे स्कीमा का हम यहाँ पे क्लास बना रहे हैं, राइट? करेक्ट करेक्ट. अभी यहाँ पे एक्चुअली क्या होता है, जांगो में ORM स्ट्रक्चर फॉलो होता है. ORM मींस ऑब्जेक्ट रिलेशनल मॉडल. सो द वे यू इंटरेक्ट विद द डेटाबेस इज वाया क्लासेस. ऑब्जेक्ट रिलेशनल मॉडल. अच्छा, या ऑब्जेक्ट रिलेशनल क्योंकि मैपर या बोल लो या मॉडल बोल लो. यू इंटरेक्ट विद क्लासेस टू द इसमें डेटाबेस. ऑब्जेक्ट रिलेशनल मॉडल, क्योंकि मतलब नॉर्मल एसक्यूएल में लाइक रिलेशनल डेटाबेस में ईआरपी हम एंटिटी डायग्राम बनाते हैं ना, हाँ, यहाँ पे ऑब्जेक्ट रिलेशनल या ऑब्जेक्ट रिलेशनल मॉडल. यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम मॉडल, लोग? हाँ, ऑब्जेक्ट्स बना रहे हैं हाँ, स्कीमे के. क्लासेस बना रहे हैं, यानी इसको हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की. पाइथन एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, करेक्ट? तो अगर आप डेटाबेस में अगर टेबल भी बनाते हैं तो टेबल से वैल्यू रिट्रीव जब आप करना चाहेंगे, जैसे कि आपने एक पर्सन करके एक टेबल बनाया जिसमें फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एज, ये सब चीज़ें हैं, बस ओनली 3 फील्ड्स. अगर आपको वहाँ से रिट्रीव करनी है वैल्यू, तो आपको कोई एक ऐसा स्ट्रक्चर तो चाहिएगा जिसमें वो डेटा होल्ड कर सकें, करेक्ट? अगर आप जांगो में भी किसी भी लैंग्वेज में बनाएंगे तो आपको कोई स्ट्रक्चर चाहिएगा जिसमें आप वो डेटा होल्ड कर सकें. जैसे कि जब आप कोड कोड लिखें यहाँ पे, तो आपको फर्स्ट नेम मिलना चाहिए, बराबर? अगर आप टाइप करें फर्स्ट नेम तो डेटाबेस से फर्स्ट नेम मिलना चाहिए. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हम लोग स्ट्रक्चर बना रहे हैं अभी. इसी इसी क्लास का यूज करके हम लोग डेटाबेस में पहले स्कीमा बनाएंगे सबसे पहले, और इसी क्लास का यूज करके हम लोग डेटाबेस में उस स्कीमा के अगेंस्ट वैल्यू इंसर्ट कराएंगे. अच्छा अच्छा, ओके, सो ठीक है. सो अभी हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग फॉरेन की डिक्लेयर करेंगे. यहाँ पे हमने कैटेगरी करके क्लास डिक्लेयर किया है, सॉरी प्रॉपर्टी डिक्लेयर की है. वो कैटेगरी प्रॉपर्टी है कैटेगरी क्लास की. फॉरेन की विल बी कैटेगरी, and we have to define one more thing, one more constraint that I have forgotten to write it here, that on delete. ये ऑन डिलीट क्या है? ये ऑन डिलीट होता है, क्या होता है, जैसे कि आपने यहाँ पे कैटेगरी बनाया, करेक्ट? अब समझिए कि अगर ये ऑपरेशन कैसा होता है, अगर आपने आपने यहाँ पे कैटेगरी समझो स्पिरिचुअल कैटेगरी है, बराबर?
एक स्पिरिचुअल कैटेगरी है, और उसके अगेंस्ट में आपने 10 ब्लॉक्स बना रखे हैं स्पिरिचुअल कैटेगरी में. Now just think that somebody goes and delete the spiritual category, correct? If somebody goes and delete the spiritual category, what कैटेगरी itself, हाँ. yeah, so what will happen to this the child blocks that we have created, which are under category spirituality? अगर आप जाके कैटेगरी इज इक्वल टू स्पिरिचुअलिटी वाला रो डिलीट कर देते हैं डेटाबेस में से, तो ब्लॉग वाले डेटाबेस में जो स्पिरिचुअलिटी के ब्लॉग्स हैं, those blocks will become orphan, right? They don't have any हाँ. category now because category table ही exist नहीं करता है. फिर कैटेगरी टेबल कैसे एग्जिस्ट करता है, बट कैटेगरी स्पिरिचुअलिटी एग्जिस्ट नहीं करती कैटेगरी टेबल में. तो क्या करना तो चाह रहे हैं हम? डिलीट हो जाएंगे क्या? हाँ, जब आप कैटेगरी इज इक्वल टू स्पिरिचुअलिटी डिलीट करते हैं, तो ऑन डिलीट क्या डिफाइन करता है? ऑन अंडरस्कोर डिलीट, इट डिफाइंस वेदर यू शुड डिलीट द ब्लॉक्स आल्सो or not. That's what it defines. So it is having cascade property, it is having some other properties like cascade or do nothing, if it deletes do nothing, and there can be some other thing like protect or restrict, like अगर आप delete नहीं कर पाएंगे in case अगर आपके पास ये है तो you can't delete it. ओके. इस तरह से. So let me make it big. It will be category. Okay, now comes the title. We have to define the title. So title we will define is equal to models dot same way char field. In that, this is a character field. So we will define max length. Title can't be more than 200 characters. So, and title can be unique. We'll define the uniqueness of it, and we will define the block text, the last column, right? Let's define block text models dot text field. It will be text field because it will hold large amount of data, right? So it should be text field, and it can't be unique, so we will keep it blank. It can hold any amount of data, so it will keep it blank. Now let's just save it. So this is our simple class created. For this also will define a special function which will be string, just in case if somebody does uh, str operation on our block object. So what it should return? So it should basically return self dot category. Okay, so not category, self dot title, the title of the block. That is the unique thing, right, in this class. वैसे जब भी हम इन जनरल कोई भी क्लास क्रिएट करते हैं तो हमें str अगर इंट ऑपरेशन चाहिए तो वैसे हमें एक फंक्शन डिफाइन करना ही पड़ेगा, तभी उस ऑब्जेक्ट्स पे ऐसे फंक्शंस हो सकते हैं. करेक्ट. वो मतलब आपने पहले भी एक्सप्लेन किया था, बस एक बार कंफर्म कर लें. हाँ, करेक्ट. वैसे ये str फंक्शन जो है ऑलरेडी अवेलेबल है ये मॉडल्स डॉट मॉडल क्लास के अंदर, और इन ब्लॉक कोई भी क्लास क्रिएट करते हैं वो बाय डिफॉल्ट ऑब्जेक्ट क्लास से इनहेरिट करता ही है, तो str फंक्शन उसके अंदर होता ही है, पर जब आप उसको कॉल करेंगे तो आपको वो टाइप देगा उस क्लास का. अच्छा. हाँ. करेक्ट. अगर आपको उस क्लास के बारे में कोई इंफॉर्मेशन चाहिए या आपको किसी को देनी है, तो यू कैन जस्ट ओवरराइड इट एंड देन प्रोवाइड द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन लाइक दिस. ओके. अब ये हमारे हो गए हैं मॉडल क्रिएट. अब हमारा नाउ टाइम इज टू बेसिकली go to the second step, performing migrations. We created the schema for database. Now we have to basically go and perform the migration. Okay, let's clear this. अभी माइग्रेशन परफॉर्म करने के लिए वी हैव फ्यू स्टेप्स. सो लेट्स गो टू द पाइथन manage.py. I have to cd what happened. Okay, I was like I think in the child folder.
ओके अभी क्या हुआ? मैनेजर पीवा है तो सही। Why it started behaving like this? Just a second. I think I am in the wrong environment. Let me correct it. What was it? Pi 38. Yeah. Let's clear it. And let me run it again. What happened to it? Hmm, let me go and again there it. Okay. अभी क्या एरर दे रहा है ये manage.py में? Let's first of all try and run the command python. So what command I was trying to run is manage.py make migrations. So but it is giving me an error that basically it is not trying, it is not able to find out this project itself. Oh, I think it was working. And what happened to him? It is saying that execute first command line, not able to find, missing 4 required arguments. I am in correct environment only. Collector field, this. Okay, I think it is giving me an error in the model itself. Uh, here itself. Okay, in the restrict one. So I have to basically define model dot cascade. Let's define do nothing. Okay, it's giving me error there exactly. That's why it was. Now where is the error? From command line, import module, execute command line. Do nothing is also having this thing. Let's keep it cascade only. I mean, ऐसे Django फ्रेमवर्क मॉडल व्यू टेम्पलेट फ्रेमवर्क होता है ना, correct, क्योंकि यहाँ पे correct. एक मॉडल फाइल है, फिर एक हाँ, व्यू फाइल भी है, और हाँ, फिर हम बहुत सारे टेम्पलेट्स क्रिएट करते हैं जिसको हम व्यू में, जिसमें हम yeah, व्यू में बुलाते हैं, राइट? correct. लाइक व्यूज देते हैं, एक सेकेंड, एक बार व्यूज देख लेते हैं. Yeah, so it is working. So basically it is a property, it was an attribute, but I was using it as a function, so no worries. So now it's working. So अभी हमें क्या करना है, हमें manage dot जो यूटिलिटी है manage.py, उसके अंदर से एक एक यूटिलिटी है वो यूज करनी है, दैट इज मेक माइग्रेशंस. ओके, सो लेट्स ट्राई एंड रन इट एंड सी व्हाट हाँ. हैपेंस. python manage.py make migrations. So ये something happened, right? यहाँ पे क्या हुआ इसने, it created some files for me. So it is getting created under migrations folder. So let's go and see there. So I click here, I will see that there is a migration folder and there is an initial.py file. So what it is doing, so it is basically performing some database operation, Django.db, Django.model.duration. So it is creating a schema, model.migrations.create model, what all fields I want, like this, and here also it is creating. So this is done, this is created. Okay, now so our schema is created. So to check that, right, of whether our schema is available for us to validate or not, so we can do that via, हम लोग कर सकते हैं via
पाइथन शेल कमांड, पाइथन का भी एक शेल कमांड है जिससे आप डेटाबेस से इंटरेक्ट कर सकते हैं. देयर इज वन वे टू इंटरेक्ट वाया पाइथन शेल, द अदर वे टू इंटरेक्ट इज वाया एडमिन पैनल. सो अब हम लोग ट्राई करते हैं पहले पाइथन शेल. लेट्स सी वेदर आवर डेटाबेस this thing is available or not. So I'll just do python manager py shell. Okay. अब शेल कमांड हमारा चल रहा है. अब हम लोग को टाइप करना है from first underscore app dot models. Okay, import category. Okay, no error came. Now what I will do, I'll just try and get some all the objects that we have. Print category dot, so this is a syntax, right? Objects dot all. Object dot all. Category has no attribute object, so we have the correct this thing, right? Category. Yeah, category. Objects first underscore app underscore category. Just a second, let me what we have imported. First underscore app dot models, first underscore app dot models, and from there we are trying to import category, correct? So it should import it's giving some weird error today. I just ran before coming to our class. I usually do run all things before they're in the class, but okay, maybe there is no data in this, so maybe I will just quit and clear and again run it. Okay, let's import again from मतलब शेल स्टार्ट किया मतलब हम तो ऑलरेडी में थे ना, राइट? टर्मिनल में लाइक हाँ, तो ये टर्मिनल. एसक्यूएल के लिए, सॉरी, जो करेक्ट क्वेरी करेक्ट लिखते हैं वो वाली शेल. करेक्ट 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 करेक्ट, करेक्ट क्योंकि ऐसे एरोज उसके नीचे होते हैं का. correct. So I'll just import into category and I'll just type in category. And in this I will give a category name, right? What was the thing? Category name. Category underscore name is equal to spirituality. Okay. And then t is equal to this t dot save. Nope, there's some issue. I think what it is doing. Force. What is the end output? No such table. First step underscore category. Ah, I missed one step actually. So what step I missed, I will let you know. So we did the migrations currently, but we haven't migrated. अभी क्या किया हमने, माइग्रेशन बनाया है बट हमने माइग्रेट नहीं किया स्कीमा है. क्रिएट है पर माइग्रेट माइग्रेट नहीं किया. नहीं किया. सॉरी माय बैड. सो ये दिस काइंड ऑफ थिंग्स कैन हैपन. ओके. वो So शो रन माइग्रेशन, राइट? yeah, run migrations, correct. So you remember, right? Yeah. No, not run migration. It was make migrations and Show migrate command. Okay, migrate. Okay. Yeah. So now it is migrated. Now let's run again the shell command. Let's perform the same thing from first underscore app dot models, import category. Okay, now I'll just try and print again category dot objects dot all. Okay, it gave me a empty query set. Now I'll try and insert some data. Category, I'll give category underscore name is equal to, I'll give it a spirituality, right? Spirituality, and I'll just enter and t dot save. So it will get saved. Now when again I will run print that, so it gives me category spirituality. If I print category dot objects dot all, so it gives me the category that has saved in the database.
Mm-hmm. Okay, so this is I mean short thing about Python shell command. So you can also query it. You can So query. it's is it like Python scripting for interacting with database? Yes, क्या yes. बोलते हैं फिर इसको? ये पाइथन शेल है और इसके थ्रू आप हाँ डेटाबेस से इंटरेक्ट कर सकते हो. हाँ आप सीक्वल अगर आप जैसे कि क्या होता है कि सम डेवलपर्स हाँ आर हार्डकोर डेवलपर्स ओनली, दे डोंट अंडरस्टैंड द हम्म, डेटाबेस. So हाँ for them this kind of query language is very much beneficial. But say हम्म there are certain developers who are who understand database, who understand everything, so they can either use this or either use that, whichever हम्म. comfortable to them. तो ऐसा पॉसिबल होता है क्या कि जैसे एसक्यू जैसे डेटाबेस ना तो एसक्यूएल लाइट है, सपोज इट्स अ बिग प्रोजेक्ट, तो डेटाबेस तो ऑब्वियसली किसी जैसे माई एसक्यूएल जैसे कोई डेटाबेस प्रॉपर डेटाबेस में होगा, तो उससे सीक्वल से इंटरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन ऐसे स्क्रिप्टिंग भी यूज़ कर सकते हैं क्या? Correct, we can use it. हाँ Abhi, this Python shell doesn't know that from where it is getting the data. Python shell is only interacting with the via our this class, ऑब्जेक्ट object. या So behind the scenes, we have configured the data source in the settings.py. We saw that, right? Here we have configured databases. You can change the database engine from Django SQLite 3 to Postgres ओके also. ओके Now, if you do that, you have to again do make migrations, because it will, if you do make migrations, it will first of all go into the database and see, compare. It will try and compare what entity differences we have. So based on that, it will prepare the migration script like this. And when you perform migrate, it will copy the entire schema into the database. Let's see if a new database, so it will copy the entire schema, whatever columns or you have, into the new database. and it will create objects, right? Then suppose if it's a ऐसे Objects in the sense, I mean, it will be a schema. मतलब जैसे हाँ जैसे यहाँ तो मैंने खुद ही क्रिएट किया Uh, ऐसे ऑब्जेक्ट्स और फिर स्कीमा सब कुछ खुद ही क्रिएट किया और एसक्यूएल लाइट को अपडेट किया उससे hmm. अगर हमारे पास ऑलरेडी डेटाबेस है Okay, so you are talking about the data, right? What will happen to the हाँ data? डेटा Okay. हाँ So data can also be taken care. So if we can create scripts to basically copy the data. So there are many migration tools itself that are available. First of all, we will create the schema via our migrate command, and we can perform the migrations. We can do that. Migrations, data migrations can be taken care. ओके Not with Django, but data migration can be taken care explicitly. We can create scripts. I mean, in SQL, we have an option to create a data script, which will create. I mean, if there are huge number of records, right? First of all, if you have already running data, so we have to basically rethink whether we have to migrate our database or not. Because if you are having 10 lakhs of records, right, and there should be a very genuine reason or a very uh, I mean, showstopper reason that basically is opting you to go for a new database. It can be, there can be reason, but if there is a reason, then we have to find a solution. The solution can be you migrate the schema via our models. This like this make migration, and you create a database script which will take care of performing the migration of data. That can be done. Okay, so I mean those kind of things are basically job of database administrators. Those, they are very much hardcore trained people, which mostly work on the I mean database side, database administration side, and they basically take care of migrating data from one database to another, one source to another. So they perform those kind of admin tasks. So I mean, they can do that easily. Okay, so this was about the migration. Now we want to see this newly added models category and block into our admin database. So first of all, let's go into the admin database and see whether we have them or not. Okay, I will run python dot this and run server.
So it will run. Then I'll just go to the admin panel. Let me minimize it. So the username and password was admin. Okay, here is my, so I don't see them, right? Currently, I don't see categories and blogs table appearing here. So let's try and basically create them. So what we have to do, we have to basically go to the admin.py file, and we have to write one code. Already it's, whenever you create this app, right, this admin.py file comes as default, and it has already one import being made, that is django.country import admin. So we have to make use of the same import by writing admin.site.register. Okay, so here we have to register a category and block. So for first of all getting the category, we have to import that. So we have to import by first tab dot models import category comma block. So first of all, I will register admin.site.category. Can I will then register admin.site.register block. Okay, so this is done. Now I'll just refresh it again. So you see, right, these things are coming now, and you can also see that the category that we have inserted, spirituality. So it Yeah, also appears. spirituality. Yeah, I will go to the blog and I'll try and add a blog. So I'll first of all select a spirituality. So I'll just type Hinduism, or I mean any religion. This is text on. तो ये सारे बॉक्सेस जैसे आ रहे हैं ड्रॉप डाउन, ये सब अपने आप ही आ गया? Yes, that's the तो beauty ये of मतलब Django. ये Django का beauty है, but ये admin panel है. This admin panel we don't expose to user. हाँ हाँ. Admin panel is something that if you are admin of a site, you take care of admin panel. But मैं आपको just example दिखा रहा हूँ. We will also create such kind of boxes and everything. I will come to that part, but I'm just showing the listing. We are first of all focusing on the data listing part, how we can fetch data from database and show it Okay. on our page. हाँ. Then we will come to the part how we can basically insert the data in the database, right? So let's do first one thing. I mean, insert the data in the database. So from admin panel, so I'll just insert it, save. So there is one blog on Hinduism. I will also enter one more blog spirituality. I mean, Islamism. This is a text on Islam. I mean, we can add few more categories like let's add entertainment. Entertainment. Let's save it. Go to the blogs part. Add a new blog where we can select entertainment. So I will say Bollywood. This is a story. Simple text I'm typing. Bollywood. Okay, save. And I can again add a blog on something else. Entertainment. Let's say Tollywood. Tollywood or Hollywood, right? Yeah. So just that text on Hollywood. Let's save it. So this is the way you can, मतलब आप बना सकते हो. अभी आपने डेटा बना लिया, ये सब बना लिया. अब हमारा डेटा, अब हमारा काम हो गया है. सबसे पहले जो हमारे जो 4 स्टेप थे वो सारे हो गए हमारे. गो बैक टू द मॉडल्स फाइल. हमारा फर्स्ट स्टेप था क्रिएटिंग डेटाबेस स्कीमा, हो गया है. परफॉर्मिंग माइग्रेशन हो गया है. एडमिन पैनल में सेट हो गया है. डमी डेटा डिस्प्ले हो गया है. अब हमारा फिफ्थ स्टेप है get data from database and display it in the UI via template. So let's try and do that. Okay. अब हम लोग जाएंगे view.py में, view फाइल में. क्यों जाएंगे हम इसमें? क्योंकि यहाँ पे ही हम लोग डेटा बाइंड करा रहे हैं किसमें, हमारे टेम्पलेट में. करेक्ट. अगर आपको याद हो कल की क्लास जिसमें हम लोगों ने ये नेम
ये डिक्शनरी पास करी थी, वी हैव पास दिस डिक्शनरी इन द टेम्पलेट राइट, Yeah. और उसके अंदर हमने एक की डिफाइन करी थी नेम, सो दैट नेम इज समथिंग वी हैव पास्ड इट टू index, and this name basically was used to retrieve the data. We will also try it by getting the data. So first of all, let's get all the category. Let's do a simple step from first app dot models import category. First of all, let's try and import the category. So we will have a page specifically for category which displays the category thing. Okay, let's do that. I don't need this thing, or let it be as it is. So we will create a we will create a new view itself. We will create a new view. In Mac, we don't have a facility to basically redo or undo. Undo is there, but redo I'm not finding it actually. So we will define a function and we will say category listing. We are going to list the categories, whatever categories we have. Okay, so it will be having requests. We are creating a new view in the categories data. How we will write it? Categories. Same way we wrote command in the shell, right? We will write category dot objects dot all. So we will first of all fetch all the categories, and what we will do, we will keep it in the in a property called as category, and in the dictionary key, and we will pass all the categories. Okay, now what we will do, we will return the render function, request comma. We will define a new template. We will not use the same template. Let's define a new template, and we will pass the context as data. Okay, so this is done. Now let's go to the template part and define a new file, categories.html. Now you see the beauty of Visual Studio Code. So I have installed one template, one snippet. You can also install it, Bootstrap 4. Hello. Bootstrap 4 by Ashok Okay. Koi. Okay, you can install it. You can refer this video again. You install it, Yeah. and then what you can do, you can automatically write the code. Entire code can be written. Okay. How it can be written? Just type B4, and there is a this first symbol is there before dollar. So this is a basic syntax to create the entire HTML having all the Bootstrap links. So let's see. Okay. You see? Bootstrap link. So what it did, it just Bootstrap का सारा JS और CSS जो भी चाहिए वो सब हमें दे देता है. So these are all CDN. I mean Bootstrap का static site है, वहाँ पे ये सारी CSS hosted है. So we don't need to download and install in our local. We can just refer that CSS, that CDN, and we can create our own projects. So यहाँ पे हमारा link है, यहाँ पे CSS है, यहाँ पे JavaScript भी है, but JavaScript is something we won't use, we will not use much. I mean, Bootstrap might be using it internally, but we might not be directly using Bootstrap JS. We will be directly using Bootstrap min.css, so CSS part of it. Okay, now let's create some grid. Okay, so grid create करने के लिए Bootstrap ही एक चीज प्रोवाइड करता है जिसका नाम है लेट्स क्रिएट अ लिस्ट, नॉट ब्रेड क्रम्ब. आपको ये जो भी टाइटल्स दिख रहे हैं ना, ये सारे बूटस्ट्रैप के स्निपेट्स हैं. इफ यू क्लिक ऑन इट एनी ऑफ वन एंड दे आर सेल्फ एक्सप्लेनेटरी. अभी बटन चाहिए, किस टाइप का चाहिए? इनपुट का चाहिए. बटन चाहिए डिसेबल टाइप का चाहिए तो इस तरह से मिलेगा. आपको रेडियो बटन चाहिए तो इस तरह का मिलेगा, इस तरह का स्निपेट में मिल जाएगा. आपको टेबल चाहिए, जैसे कि मैं टाइप करूँ टेबल, तो यहाँ पे टेबल करके यहाँ पे आ गया डिफॉल्ट. ओके, so let's type in. So it gave me this table, right? Beautiful table it gave me, but I don't require all these things. So let's go back and
type in list. So list, it is having a list default. So we'll just ULLI we will print. Okay, we don't require some fancy stuff. So we'll just print the ULLI. Okay, delete it. So for writing Django specific code, right? We have to what we have to do. We have to use like this syntax. Okay, so when you can do write in for. So how we did it here? We basically had this thing, right? Load static and this thing, because we are using HTML. We have to go and use Django HTML. Then it will understand actually what we are typing. So if you here, if you see, I will type. I'm trying to type for. This is also snippet for that. Might go little, might be going little fast, but just try and understand category. Yeah, I'll see the recording again. That's why, you know. Yeah, okay. So what we are trying to fetch now, where is the views.py? We are trying to fetch the category, right? So I'll just copy this and I'll just paste it in the categories dot this thing, control V, and I'll control X, and let's put the and for at the end. सो यहाँ पे थोड़ा सिंटेक्स अलग है, अगर आप देख रहे हैं रेगुलर पाइथन में सिंटेक्स होता है यू टाइप द फॉर लूप, यू हैव अ कॉलन इन प्लेस एंड देयर इज अ एडेंटेशन दैट कम्स इन. But if you want to write some Python code in HTML, you have to uh, basically आपको इसको परसेंटेज मतलब ब्रेसिस में रैप करना रहेगा, और जैसे ही आप फॉर लिख रहे हैं उसके लिए एंड फॉर आएगा, इफ होगा तो एंड इफ आएगा, इस तरह से होता है. So I'll just use this category now, and what I'll do, I'll just category dot category underscore caps is on. So I will tell you why we are doing like this, category underscore name. So this is done. Now we have the view, we have the code written for it. But what we want, we have to map this view with the URL, right? Some URL should be mapped. So where we can map it? Let's map it here. Let's give it an example called as templates, right? So we can give it as a model example. Let's save it and let's go to the, but here we have to give the views as the name of the view is models categories underscore temp category underscore list came already. Okay, so let's go to the view and let's type in copy this and let's paste. Let's fingers crossed, let's see we don't get into any error. So we got into some error, so let's see what exactly is the error. So yeah, we haven't passed the HTML name, right? The template name right here, so we have to pass that. Here we will pass categories dot HTML. Okay, now let's refresh it. So you see, right, spirituality, entertainment, this is not looking good, I mean UI wise, because we did some ULLI, right? I mean I think I messed up the ULLI. It should be list group here like this. It should be on the top and this should be outside. Okay, let's refresh it again. It got saved or not? It got saved. Oh, might be some issue with the CSS. We'll check that. But in short, you got the idea, right? Yeah. इस तरह से आपको ये डेटाबेस से पूरा आके दिख रहा है हमने क्या क्या ऐड किया, एंटरटेनमेंट, स्पिरिचुअलिटी. अब एक और ऐड करके देखते हैं जस्ट फॉर आवर सेक. लेट्स गो एंड ऐड अ ब्लॉग, अ कैटेगरी
here we'll give it a name technology. Save. ओके सेव हो गया. अब इसको रिफ्रेश करोगे आप तो डायनामिकली सारा डेटा पुल करके ला रहा है. You got it right? Yeah. Let's do some now it is appearing little better. We can even remove the class. We can just have a simple ULLI. No required for keeping it a class, so it will give us a better view actually, right? The bullet simple bullet points we are displaying. I mean, we can have a h1 tag also on top which says h1 what is happening h1. Okay, this below. Basically, we are using Bootstrap for front end, right? Sorry, bootstrap. यहाँ पर हम Bootstrap use कर रहे हैं आप, right? हाँ अभी HTML. हाँ बूटस्ट्रैप एक्चुअली स्टाइलिंग के लिए आपका यूआई जो है स्टाइलिंग के लिए इसको अगर कुछ आपको कोई फॉर्मेटिंग देनी है अच्छा ही लुक एंड फील देना तो बूटस्ट्रैप यूज करते हैं. So the list of categories. Okay, let's have a br tag. Let's save it and refresh it, right? And the list of categories. So this is how you get data from database, display it on the UI. Okay, so for now I mean we'll stop here. Okay. We have gone, I think we have covered most of all the things, right, that we targeted for today. So these all things we have covered. Tomorrow what we will do, we will try and see extend the same thing to insert update, right? Let's try and insert data via our templates and using those all things. Let's try and do that, and maybe we will see some more concepts tomorrow. Okay. Okay. So you आप इसके अंदर और देखिए अगर आपको कुछ डाउट्स है. I'll share the demo link. I'll try and share by today itself. Yeah. If not, I might share it tomorrow. I mean it depends. मेरे को if I वीडियो के अपलोड होने में टाइम लेता है थोड़ा. अच्छा कोई बात नहीं. हाँ ठीक है फिर. तो मैंने आपको शेयर किया था डेमो डे 3 का लिंक शेयर किया था. I'll share day 4 link also. Okay. Okay Ankita, I mean okay, have a good day ahead. Okay. Okay, yeah, chalo, bye.